Good morning, student. Today we will discuss regarding electrochemical machining (ECM). तो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था अनकन्वेंशनल मशीन प्रोसेस की फर्स्ट और सेकंड के बारे में, मतलब अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और अब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग electrochemical machining (ECM). It is also very important process which is implemented using in industry, particularly for mass production purposes. mass production के लिए ये जो प्रोसेस यूज़ करता है, क्योंकि हार्ड मटेरियल के ऊपर ये प्रोसेस यूज़ करता है. साधारण मशीनिंग प्रोसेस से, ऑपरेशन से मटेरियल रिमूव नहीं करता है. वो जो मटेरियल के ऊपर जो भी डिज़ाइन, जो भी कॉम्पोनेंट बनाना है, दैट इंडस्ट्री इज यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग process. Here we need a electrolyte solution, anode or cathode. The tool is functioning as a cathode and workpiece is functioning as a anode. The electrolyte highly pressurized force में आके workpiece के ऊपर गिरता है with high current. So the particular area that increase the temperature, उसके साथ में उधर का जो मटेरियल निकालना शुरू हो जाता है. So that electrochemical machining is very important, we are using in our industry. So removing material by an electrochemical process. So here we are using removing material from the hard material. So working principle क्या है? Positive ions move towards the tools and negative ions move towards the workpiece. So opposite of electroplating. Here जो ions है, you know the ions, all the matters are made up of atom. Any atom or group of atoms that bears one or more positive or negative electrical charges is called ion. Means is going to go, to remove, to go, do the next action. So here an electron crosses the gap between the workpiece and the tool. Metal ion come away from the workpiece. इधर आपको जो मशीन में ख्याल करना चाहिए, there is giving some gap between cathode and anode, means workpiece or tool. उसका बीच में से देखो ना, you see here the electron crosses the gap. Electron means the electrolyte is highly pressure on the workpiece. The electron cross the gap between the workpiece and the tool. Metal ion come away from the workpiece. So there is a highly temperature with high current and low voltage में आपके electrolyte में आके ये जो pressure से workpiece के ऊपर गिरता है. और इधर जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सिलेक्शन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन है. जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन में मेनली लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट सिलेक्शन करता है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ एनोडिक डिसोल्यूशन. सो मोस्ट कॉमन टूल हियर वी आर यूजिंग ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका पैरामीटर में आपको ख्याल करना पड़ता है, करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड फीड रेट. इसका जो स्पीड रेट है, फीड रेट है और डेप्थ ऑफ कट, इसमें भी आपको ख्याल करना पड़ता है. सो हियर आई एम गिविंग ए ड्रॉ, मीन्स पिक्चर दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन प्रोसेस में. यू सी द वर्क पीस विथ एनोड, यू सी द टूल दैट इज ए कैथोड, और डीसी पावर सप्लाई है. डीसी पावर सप्लाई टू द एनोड एंड इज गोइंग टू बी ऑन द कैथोड. सो हियर द प्रेशर गेज इज गिवन बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड यू इज टेकिंग, सो इसे पंपिंग करके इसमें हाई फोर्स में आके इधर गिरता है. इसको बीच में जो गैप है, सो विथ हाई करंट, तो हाई करंट है, लो वोल्टेज के हिसाब से ये जो वर्कपीस के ऊपर गिरेगा, इस टेम्परेचर की माध्यम से इसका मटेरियल रिमूव होना शुरू करता है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन प्रोसेस में इसमें भी देखो, वो भी हमने दिया, वर्कपीस दिया हुआ है और टूल है और इलेक्ट्रोलाइट टैंक, पंप फॉर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट, डीसी पावर सप्लाई. ये जो मशीनरी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन प्रोसेस की मदद से इंडस्ट्री में आजकल हाई सरफेस फिनिश, हाई क्वालिटी का कॉम्पोनेंट तैयार करना शुरू किया हुआ है. स्टूडेंट, आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करो. नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग रिगार्डिंग प्लाज्मा आर्क
मिशनिंग मतलब P.A.M. दिस इज़ ऑल्सो मेटल कटिंग प्रोसेस है. इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वी आर यूजिंग, प्लाज्मा आर्क, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क, इसमें टॉर्च है, इसमें नोजल है. तो इसकी मदद से आपका जो मटेरियल जिधर निकालना है, बाय हेल्प ऑफ द प्लाज्मा आर्क वी आर रिमूविंग द मटेरियल. सो कम टू द पॉइंट, इधर भी आपका जो वोल्टेज है दैट इज 12 to 24 वोल्टेज मेंटेन होता है. इसको भी डेप्थ ऑफ कट मेंटेन करना है, कटिंग स्पीड और फीड रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वी आर यूजिंग दैट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल योर सिलेक्शन. सो ये जो प्रोसेस भी है, कटिंग ऑफ अलॉय स्टील, कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, alloy of copper, alloy of nickel, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल कटिंग वाले के लिए प्लाज्मा आर्क मशीनिंग हम इस्तेमाल करता है इंडस्ट्री में. सो हियर इसका टेम्परेचर है एक्सेस 20,000 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन होता है पर्टिकुलर कटिंग एरिया में. सो हियर इट इज़ ए मेथड ऑफ कटिंग मेटल विथ प्लाज्मा आर्क और टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क. Torch. The torch produces a high velocity jet of high temperature ionized gas plasma. Here the electrode we are using a tungsten 2, the 2% of the thorium material का electrode हम इधर इस्तेमाल करता है. That cut by melting and displacing material from the workpiece. So high temperature में melt होके जो works का सरफेस के ऊपर के मटेरियल निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज करता है. इसका पैरामीटर यू सी द आर्क वोल्टेज, आर्क करंट, गैस प्रेशर, कटिंग स्पीड, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस एंड गैप फ्लो रेट. उसका डिस्टेंस कीप अप और फ्लो रेट इसमें इंपॉर्टेंट है. सो उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल यू सी द आर्क फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड and the workpiece is constricted by a fine bore copper nozzle. Fine bore copper nozzle से high jet pressure होके workpieces के ऊपर गिरता है. This increase the temperature. is a high temperature है और temperature increase होके and velocity of the plasma. High velocity में plasma emanating from the nozzle. Nozzle से इतना temperature, इतना pressure निकाल के जिधर से workpiece के ऊपर से आपका material निकालना है वो आपको इधर निकाल सकता है. The application of P.A.M. is used for cutting alloy steel, stainless steels, cast iron, copper, nickel, titanium, aluminum, and alloy of copper and nickel, etc. Here we are using that gas for aluminum के लिए आप यूज़ करता है आपका नाइट्रोजन गैस और आर्गोन मटेरियल के लिए आप हाइड्रोजन गैस. डिफरेंट गैस सेलेक्शन फॉर डिफरेंट मटेरियल. द स्टूडेंट आई एम गिविंग some picture. Here there is see that unit head of that plasma system is a coolant is making a temperature maintain in this portion. Our cathode is here. Stand the distance between the workpiece and the nozzle. Our sealing gap the avoid not leak नहीं होना चाहिए और carrying gas here they are using. So here this picture is very clear that there is a power supplying to the pilot arc to this nozzle body or plasma gas is coming from the electrode. Electrode here using tungsten 2 और ये temperature maintain करता है यूनिट के अंदर कूलिंग वाटर से. सो इज अ प्रेशराइज हाई टेम्परेचर हाई वेलोसिटी में आकर आपका जो जॉब के मटेरियल कट करने का सिस्टम दिया हुआ है. सो हियर टुडे वी आर डिस्कस्ड रिगार्डिंग टू प्रोसेस. ये जो दोनों प्रोसेस को आपका अच्छा से समझ लिए और आपका नोट करो और इसको आपको पढ़ाई करना है. क्योंकि आजकल ज़माने में इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द इंजीनियरिंग, कम्प्लीशन ऑफ द डिप्लोमा और एनी टेक्निकल फील्ड में जाने के टाइम आपको इसका नॉलेज होना है. नॉलेज के साथ में आपको एक काम करने का क्षमता, काम करवाने का क्षमता भी आपको मिल जाएगा. सो स्टूडेंट ये जो चीज़ हम जो पढ़ाता है आप इसको दूसरा को भी शेयर करो और पसंद करना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है. सो दैट नेक्स्ट जो वीडियो में रिमेनिंग प्रोसेस के बारे में हम जल्दी मिलेगा. तब तक थैंक यू.